Now you tell me honestly, अगर ये शॉर्टकट काम करता तो what was the need of having these 1000 numbers? Was there any need of having these 1000 ratios if only 5 ratios were working? Also, all the big investors, legendary investors like Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, Peter Lynch, they spend hours and hours doing research, reading about annual reports, reading news, etc. If this shortcut was working, what was the need of doing all this? Got the point? Got the point? That's the first hurdle. शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए. Right? If there are two people in the market, one with only limited information, limited understanding, and the other with complete understanding of these ratios, complete understanding of finance, the second person, who will do better in the market? Who will do better in the market? Second person. Right now, everyone here in the class is the first person. Yes or no? Yes? So that's the first hurdle. The second hurdle in investing is, see, when you are doing investing, you will have to look at companies operating in different sectors. So that's the second problem. Every sector has its own trends, has its own patterns, has its own understandings to be made. Each sector behaves differently. The ratios that work in pharma, they don't work in IT. जो रेशियोज आईटी में काम करती हैं वो बैंकिंग में काम नहीं करती हैं, जो बैंकिंग में काम करती हैं वो हेल्थ में काम नहीं करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करती हैं. Yes or no? Each sector also behaves differently. Each sector has its own cycle, has its own patterns, has its own trends. Yes? लोग जो एनालिस्ट होते हैं, people who are analysts working in the industry, they spend their entire life building expertise on one particular sector. और रिटेलर से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो सारे सेक्टर्स को स्टडी कर लेगा. कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा? दैट इज द सेकेंड हर्डल. ठीक है. द थर्ड हर्डल आफ्टर दिस, which is a very very genuine problem, very genuine hurdle, third hurdle, is time. It is time. I can confidently say, जितने भी लोग आज क्लास में बैठे हैं, confidently I can say this, that none of you can spend regularly every week, none of you can spend more than 2-3 hours every week on investing research. Is this true or not? I can confidently say, कोई भी नहीं कर पाएगा रेगुलरली हर हफ्ते 2-3 घंटा. नहीं कर पाएगा. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. मैं आपको 10,000 चीजें पढ़ा सकता हूं और प्रैक्टिस करने को बोल सकता हूं, बट अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, देन इट इज ऑफ नो यूज. इट्स ऑफ नो यूज. All of you are part-time investors. Yes, you're not full-time investors. You want to grow your capital at a steady rate, at a good growth rate, by spending some hours every week. Yes? Yes. But problem ये है कि there are 6,000 companies listed on the stock market. For doing research on every company, it will take multiple hours. For doing research on multiple sectors, it will take multiple hours. कैसे करेंगे? तो ये भी एक हर्डल है, ये भी एक प्रॉब्लम है. टाइम भी सॉल्व करना है. Yes?
Let us say somehow you solved these 3 hurdles. Somehow आपने language भी सीख ली, आपने sectoral understanding भी ले ली और time भी spend कर लिया. Let us say you solved all this. Then there is a 4th hurdle also. The 4th hurdle is, listen very carefully. 4th hurdle is conviction. Conviction. Big problem with retail investors. होता क्या है, whenever you look at any company and you look at, let's say, 10 ratios for that company, 6 out of 10 will be good, 4 will be average or bad. Yes or no? किसी की क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ग्रो नहीं कर रही है. A company which is growing is also overvalued. A company which is undervalued, news is bad, something else is bad. Yes or no? Is there an investing opportunity which exists, which is a perfect opportunity from all angles? Can there be an investing opportunity like that, which is perfect in every way? ऐसा होता है क्या? होता है ऐसे? All ratios are good, everything is good, even valuation is good, right? तो होता क्या है, that you are not able to build conviction. You're not able to build conviction. कितनी बार ऐसा हुआ है पास्ट में, आप मुझे बताइए. How many times has it happened in the past that you were able to identify the right company, you were able to identify Bajaj Finance, Dixon, Varun Beverages, you were able to identify these companies, Titan, but you did not invest in them. आपने इन्वेस्ट नहीं किया. कितनी बार हुआ ऐसे? Because you did not have the conviction. Because you were not able to solve for conviction. Right? And because of the 4 problems that I've written on the panel, 4 problems are hurdles that I've written on the panel, all of you retail investors, they are forced to rely on tips. इसीलिए टिप्स लेते हैं लोग, क्योंकि ये सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं. किसी को मजा थोड़ी आता है टिप्स लेके, कॉल्स लेके. Everyone in the world knows that you will not be earning money through tips. Everyone knows. सबको पता है. Everyone knows कि टिप्स से पैसा नहीं बनेगा. बट करें तो करें क्या? We will not be able to do research on our own because of these 4 hurdles. Yes? Yes or no? ठीक है. ये 4 प्रॉब्लम्स मान लीजिए किसी तरीके से हमने सॉल्व कर भी दी. 4 problems, let us say somehow we solved it. We also got the conviction to invest. Then there is a 5th problem, a big problem. The 5th problem is timing. Deciding whether right now is the right time to enter or right time to exit. Entry exit time. Because even when you invest in a great business, even if you invest in a great business at the wrong time, you will still not make money. If you invest in the great business and exit at the wrong time, you will still not make money. आप अच्छे से अच्छा बिजनेस पकड़ लो, गलत टाइम पे एंट्री ले लो, नहीं पैसा बनेगा. गलत टाइम पे एग्जिट ले लो, नहीं पैसा बनेगा. ठीक है. These are the 5 problems. Now the good news is, I'll move to the next page, that these 5 problems are identified. I would also want all of you to take a maybe screenshot of this. All these 5 problems, hurdles are identified. Once these are identified, we can make an attempt to solve these problems using technology, by learning a lot of new things.
we can attempt to solve these problems. All right, you can take a screenshot of this. ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है that you solve these 5 problems. And the good part is you can solve these 5 problems with AI. कैसे? आप लोग मुझे बताइए. Thousands of ratios are there. Will humans be able to better understand these 1,000 ratios, or AI will be able to do a better job? AI will be able to do a better job here in understanding the language of finance. Right? Acha, will AI be able to better understand each sector? What are the patterns in each sector? What are the trends in each sector? Or will humans be able to better do? AI will be able to better do this. Will AI also help me by saving time for me? Yes. So AI can do research in minutes. मतलब उसको तो analysis करने में सिर्फ minutes लगेंगे. Humans can spend hours on that. So AI will also be able to save us time. Will AI be able to give us conviction? I don't know. I will ask you. Let's put a question mark here. मैं क्लास के एंड में आप सबको ये क्वेश्चन पूछूंगा. Do you have conviction now or not? ठीक है? That's the 4th part. 5th part is AI will also be able to solve for entry exit time. ये भी सॉल्व कर देगा. पांचों की पांचों प्रॉब्लम्स AI से सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है? अब ऑलरेडी लोग पूछ रहे हैं, चलिए AI पे चलते हैं. AI पे जाओ, कौन सा AI यूज करें? AI के राउंड AI से कैसे सॉल्व करें these 5 problems? Already people are asking, how do we solve this? These 5 problems now that we have defined, we defined these 5 problems for ourselves also. For ourselves also, we defined these 5 problems. And we have been working on this for a while. We started working on these 5 problems since August of 2024. Exactly 2 साल पहले, इंडिपेंडेंस डे के बाद ही, 2024 के इंडिपेंडेंस डे के बाद, हमने इस चीज पे काम करना शुरू किया कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की ये जो 5 प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई, द 5 प्रॉब्लम्स दैट आई मेंशन्ड, हाउ डू वी सॉल्व दिस यूजिंग एआई, यूजिंग टेक्नोलॉजी. पहले जब हमने काम करना शुरू किया, इनिशियली वी स्टार्टेड बिल्डिंग सम फ्लोज around the existing AI platforms, the existing AI LLMs. For example, ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. इन चारों को हमने एक्सप्लोर किया. Yes. And very soon we realized कि there is a big problem with these AI platforms. क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बताइए. What are the problem with these AIs? जब आप कोई भी इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, whenever if you have ever asked investing research question to these AI platforms, what is the problem you faced? What is the problem you faced? There are a couple of problems. People are saying accuracy is problem, timing is a problem, no context, hallucination, data. Prompt, network, data, backtesting. It's not professional. Data, authenticity, data security, giving improper result, prompt, never tried. All right. So there are a couple of issues that are there with these AI platforms that we discovered, that we found. Okay. What are these problems? The first problem is these platforms are general purpose AI platforms. General purpose. What do I mean by this? General purpose AI. इसका मतलब ये है that these platforms are not trained. They are not fine-tuned to give you results in the market. They are not trained for that. They are trained to give you a
nice sounding answer in the chat. That's it. You chat with these AI platforms and you get a nice sounding answer. That's it. That's the objective of these AIs. Yes or no? क्या इन AI का ट्रेनिंग इस हिसाब से हुआ है कि मार्केट में रिजल्ट्स बनाए? बताइए. No. These AI platforms are not trained for that. They are not trained for that. They have never been tested for that also. Never been tested for that. So first problem is these are general purpose AI. ठीक है. दूसरा problem, second problem, they don't have access to all the market data. So I would say all market data is not accessible. They don't have access to market data. They only have access to some data. See, if you go to any of these tools, chat GPT, let's say, चैट जीपीटी को आप कोई बड़ी कंपनी के बारे में पूछेंगे, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, it will still be able to pull off some information from the news, from the blogs. It will still be able to pull some information. But if you ask about the vast majority of mid cap stocks, small cap stocks, in tools ko, in platforms ko, they will have no idea at all. They will have no access to any ratio, no access to any metric. A lot of times they will deny कि मेरे पास कोई data नहीं है. They will ask you to bring data. Yes or no? These platforms will ask you कि आप data लेके आओ. Now, how will you bring data? How will you bring data? Right? For doing any kind of research, for doing any kind of analysis, as I said, there are so many of these ratios to be looked at. And all these ratios have to be looked at for the last 10 years. 10 साल का डेटा क्या चल रहा है, एनुअल रिपोर्ट्स क्या हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, सब कुछ चाहिए, सारा डेटा चाहिए. वो है ही नहीं एआई के पास, है ही नहीं. That data is not there. Most of the time that data is also not there with you. आप कैसे लेके आएंगे? लेके आइए 6000 कंपनीज का सारा डेटा. इट इज पेड डेटा, आपको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं आपको. Also all the technical data, how will you get? You can't get that. Second problem is this. Now, because they don't have access to all data, they will do assumptions. These tools will do hallucinations or assumptions. That is the third problem. See, if you ask about, let's say, is HDFC bank good to invest? Simple question you ask to ChatGPT. If it does not know the ROE of HDFC bank, for example, let's say that data is not available with ChatGPT, it will try to assume, it will try to bring some old data and do analysis based on that. Now you tell me, can you do investing based on assumed data? Can you do investing based on assumptions? No, you can't. For investing, आपको अपना पैसा लगाना है. Accuracy is the most important factor. Yes or no? Accuracy is the most important factor. Then there is also this fourth problem, which is consistency. Consistency. इसका क्या मतलब है? Consistency का simple मतलब है, if you ask one question 10 times, or let's say if 10 different users ask the same question, is HDFC bank good or is ICICI bank good? Chat GPT will say HDFC bank is good to 6 users and ICICI bank is good to 4 users. Same question, different answer. It will not be consistent. If you have already told to Chat GPT in some past thread that you are an employee in ICICI bank, then it will always keep saying that ICICI bank is the best bank in the world. It will have biases. These AI platforms also have biases.
They will have to please you, please the customer. It is more personalized. Correct. Mr. Bhupinder is saying it is more personalized than factual. True. ये सबको समझ आया? Is this clear to all of you? Is this clear? अब AI के साथ ये सब दिक्कतें हैं. हम AI को कैसे यूज करेंगे? ये सब प्रॉब्लम्स हैं. Now we realize that these problems are there, and that is why we took up a very, very big challenge. We took up a very, very big challenge. What was that challenge? That challenge was to build from scratch our own investing LLM. हमने अपना खुद का इन्वेस्टिंग LLM ट्रेन करना स्टार्ट किया. खुद से बनाने का मतलब यह है, अंडरलाइन में इनको नहीं यूज किया. इट इज नॉट अ रैपर ऑन टॉप ऑफ दिस. ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज करके खुद की ट्रेनिंग की, खुद का फाइन ट्यून किया इन्वेस्टिंग LLM फॉर द पर्पस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इन द मार्केट. ऑब्जेक्टिव अलग है अब इसका. इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, परफॉर्मेंस इन द मार्केट. इसका ऑब्जेक्टिव आपको चैट में आंसर देना नहीं है. द ऑब्जेक्टिव इज टू हैव परफॉर्म इन द मार्केट. वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर ओन इन्वेस्टिंग LLM. ठीक है. कितने लोगों को लगता है कि इंडिया में AI का LLM बन भी सकता है? हाउ मेनी पीपल फील दैट? यहां कितने लोगों को लगता है कि नहीं बन सकता? यार क्या लगे हुए हो? नहीं बन सकता. इंडियंस कैसे बना लेंगे? ये तो अमेरिकन का काम है. हम लगे हुए हैं 2 साल से. We have been working on this for last 2 years. And I would want all of you, today is Independence Day, Freedom Day. I would want all of you to congratulate yourself as Indians and feel proud in the fact that we were not only able to build this LLM. हमने LLM तो बना ही लिया, but we were also able to beat all the existing global AIs on investing benchmarks. We published a research paper claiming, हमने research paper एक publish किया जिसमें claim किया कि हमारे LLM ने इन सब AIs को हरा दिया. I am going to show you that research paper also. I would want all of you to congratulate yourself as Indians and feel proud in that fact. Give me a second. I'm just sharing my screen. Let me show you my research paper also, which is published now. That shows that our AI, our LLM, our model was performing much better than ChatGPT, Perplexity, Gemini. Is my screen visible to all of you? You can see this research paper evaluating financial intelligence in large language models, benchmarking super investing AI with other LLM engines, right? You can see my name as well as the first author. You can see the name of my team as well, who have been doing research along with me. Let me share the PDF of the research paper and the results. मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं इसके रिसर्च पेपर के. ये देखिए. सबको रिजल्ट्स दिख रहे हैं? लीडर बोर्ड दिख रहे हैं? Are the results visible to all of you? Yes or no? Yes. So you can see that in 4 out of 5 benchmark criterias, we were able to beat all the existing LLMs, global LLMs. ठीक है? So valuation depth में we came first, consistency में we came first, accuracy में we came first. Only and only in data recency we were a close second, just behind Perplexity.
and in the last completeness also we were first. So in 4 out of 5 criteria we were first. इंडिया में बैठ के, इनफैक्ट चंडीगढ़ में बैठ के, टियर 2 सिटी में बैठ के हमने ट्रेन किया 2 साल, मेरी और मेरी टीम ने, एंड वी वर एबल टू बीट ऑल अदर investing platforms, all the other AIs, global AIs. And that is the reason we have also partnered with the greatest financial news brand in India, which is Economic Times Group. I hope all of you feel proud in this fact. चलिए, very good. Let me stop sharing my screen. चलिए, अच्छा ठीक है. तो एक बात तो प्रूव हो गई, एक बात तो समझ आ गई, that this, the AI that we created, the LLM that we created is better than these platforms, than these AI. Does that mean it will work in the market? अगर चैट जीपीटी से बेटर है, क्लॉड से बेटर है, क्या इसका मतलब ये है कि रिटर्न दे देगा? बताइए, डज दैट मीन इट विल वर्क इन द मार्केट? नो, 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 राइट? दैट इज व्हाई वी टेस्टेड दैट सेपरेटली. एक तो हमने देखा कि भाई कैसे ये बेटर है बाकी है ऐसे. द सेकेंड थिंग दैट वी वांटेड टू टेस्ट वाज हाउ इट परफॉर्म्स इन द मार्केट. For that, we did the real back testing. Real back testing we did of our AI platform, of our AI model. Real back testing we did. Everyone understands back testing क्या होता है? Backtesting is basically you take your system and you expose it to past data. You take it to, let's say, the past and cut off any exposure that future has or future data has. And then you see how it performs. तो हम अपने AI को ले गए पास्ट में, अपने AI को ले गए 2015 में, 2015 का डेटा दिया. We passed 2015 data. Based on 2015 data, we asked it to create a portfolio. हमने बोला कि एक पोर्टफोलियो बनाओ. 2016 में भी बोला एक पोर्टफोलियो बनाओ. 15-20 stocks you pick up every year. 15-20 stocks every year, right? 2015, 16, 17 and go on. हर साल का एक पोर्टफोलियो बनवाया. Can any of you guess what would have been the CAGR returns of this backtesting? कितना returns आया होगा इस backtesting में? बताइए. What would have been the CAGR returns? What would have been the CAGR returns? अच्छा, just for reference, I have been investing manually. मैं manually invest कर रहा हूँ 2019 से, 18-19 से, 18-19 I have been investing since then, and I manually have been able to clock a return of 36% CAGR. ये मेरा खुद का रिटर्न है 7-8 साल का. इनफैक्ट आई विल ऑल्सो शो यू माई पोर्टफोलियो. आई विल ऑल्सो शो यू माई पोर्टफोलियो गोइंग अहेड. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे. तो ये तो मेरा रिटर्न है. अब आप मुझे बताइए एआई ने कैसा परफॉर्म किया होगा? एआई ने कैसा परफॉर्म किया होगा? सो सुपर इन्वेस्टिंग एआई, आर एआई वाज एबल टू गिव a blockbuster CAGR returns of 48% in the backtesting. 48%. How amazing is that? How amazing is that? 48% का मतलब समझते हैं? 48% means in 10 years your capital becomes 50 times, 50x. 50x. Right? ये क्यों हुआ? क्योंकि the AI was able to pick up some hidden gems. कुछ hidden gems पकड़ लिए थे AI ने along the way, which became multi-baggers. ठीक है? अच्छा,
अब एआई काम कर रहा है बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग का क्या मतलब है कि वो रियल मार्केट में भी काम करेगा? डज बैक टेस्टिंग मीन दैट इट विल आल्सो वर्क इन द रियल मार्केट? नो, डज नॉट। दैट इज व्हाई हम डायरेक्टली ये नहीं बोला कि चलो ऐसा है बैक टेस्टिंग में काम कर गया तो चलो लेट्स डिप्लॉय कैपिटल। वी डिड फॉरवर्ड टेस्टिंग, we asked it to start making baskets, we asked it to keep picking up stocks when it was live last year se leke abhi tak it has also been publishing data in the public domain mein hai, whichever stocks are picked up, whichever baskets are picked up, and it is also working in the real market mein bhi work kar raha hai। ठीक है, इस पे आते हैं रियल मार्केट में क्या रिटर्न्स दे रहा है। आई विल ऑल्सो कम टू दैट। लेट मी टेक अ स्टेप बैक and take you back to the question with which I started. Let's go back to that exercise. ये question A and B. This question was a slightly trick question. It was a slightly trick question. Why? Because this data that you see is not data of today. It is actually data of 2021. And 2021 में company A and company B both in the EV sector, I was also analyzing. मैं भी analyze कर रहा था EV sector 2021 में. And just like all of you had picked up company B, I myself 2021 के अंदर I had also picked up company B. I will write AG here. AG means Akshay Gulati. I had picked up company B. But very surprisingly, when we did the back testing of AI ने कंपनी A उठा ली। AI picked up company A. I was very surprised कि ऐसा क्यों है? Right? Now let me tell you the names of these companies, and I will also tell you why did AI pick up company A. AI ने ये क्यों उठाई वो भी बताऊंगा मैं आपको। The company that I picked up, company B, this company is basically none other than Tata Elxsi. Tata Elxsi. Tata Elxsi, it's a software company, but they also make softwares for EVs. In fact, at one point of time, they had contract with Tesla also. So an EV beneficiary, so to say. Tata Elxsi. आप लोग मुझे बताइए, अगर आपने टाटा एलेक्सी के अंदर 2021 के अंदर इन्वेस्ट किया होता, if you would have invested in Tata Elxsi in 2021, what is the returns that you would have made? What is the returns that you would have made? बताइए। इस कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था 2021 में। एआई ने नहीं, मैंने किया था कंपनी बी में, जो कंपनी आपने सबने पिकअप की बेस्ड ऑन दीज रेशियोज। व्हाट वुड हैव बीन द रिटर्न्स इन टाटा एलेक्सी लास्ट 5 years? You would have lost 10%. Tata Elxsi is down by 10% in last 5 years. ग्रोथ तो छोड़ दो, 10% नीचे है। You lost 10% of your capital. ठीक है? And the company that AI picked up in 2021 back testing, it was none other than company A, it was none other than HBL Engineering. HBL Engineering. HBL Power Systems था पहले नाम, अब नाम चेंज हो गया HBL Engineering. चलिए दिखाता हूं मैं आपको कंपनी A जो पिकअप की
HBL इंजीनियरिंग, उसमें क्या हुआ 5 साल के अंदर? I hope my screen is visible to all of you. This is HBL इंजीनियरिंग. HBL इंजीनियरिंग का 5 years का चार्ट देख लेते हैं. 2021 August, 2021 August, the price of HBL engineering, HBL power systems was 47 rupees. 47 rupees. Today, the price is close to around 700. 700. From 47 to 700. What is the growth in 5 years? What's the growth in 5 years? 15x, 15 times. 15 times. How amazing is this? How amazing is this? This is the company that was picked up by AI. अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे, why did AI pick up this company? Why did AI pick up this company? Ratios तो खराब लग रही हैं. On what basis did AI pick up this company? So we asked the AI also. We asked our AI, why did you pick up this company? And the reasoning it gave, the rationale it gave was this. Number one, it studied the global supply chain of EV. सारी की सारी ग्लोबल कंपनीज को स्टडी किया, ईवी कंपनीज को, और देखा कि ये कंपनीज अपना रॉ मटेरियल कहां कहां से खरीदती हैं, पैसा कहां कहां मूव कर रहा है ग्लोबली, कौन से पार्ट्स में मूव कर रहा है, कौन सी तरह की कंपनीज में मूव कर रहा है. ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ ईवी, इट वाज स्टडीड. सेकंड, इट आल्सो स्टडीड द मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड. मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? Every year, every quarter, management comes and gives you some guidance. They will tell you this is how we'll do quarterly, next quarter, next year, next 2 years. If the management is able to fulfill all the promises, fulfill all the guidance given, then it is a good track record. Yes? So it also studied the management track record. It also studied the future order book of the company. Future order book. And how strong is the order book? Now you tell me, basis on this, AI had picked up HBL engineering. Now you tell me, जब आप manually कभी भी invest करते हैं, whenever you invest manually, is it even possible to consider these factors? Is it even possible to consider these facts about the company? Is it possible? No. Was able to identify these hidden gems, hidden information, trends, patterns in each company, in each sector. और HBL engineering एकलौती विनर नहीं है बैक टेस्टिंग की. In 2017, it was able to pick up a company called Kai Wires and Cables, जिसने 40x ग्रोथ दी 2017 के अंदर, 2017 के बाद. It was also able to pick up PG Electroplast, another multi-bagger company that AI was able to identify. All these companies gave amazing returns, and manually it would have been impossible to find these companies. Impossible. ठीक है, ये भी समझ आ गया कि बैक टेस्टिंग में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या मार्केट में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे अच्छी कंपनीज फाइंड कर रहा है. इज दैट आल्सो अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल? इज दैट आल्सो अंडरस्टूड? ठीक है, सही है, वेरी गुड. लेट्स गो अहेड नाउ, लेट्स मूव वेरी क्विकली, क्योंकि हमें फ्रेमवर्क्स भी कवर करने हैं, कंसेप्ट्स भी कवर करने हैं. लेट्स कवर दैट. This I've already shown you that our AI platform was able to perform much better in the back testing in the last 10 years.
right? 48% I've already told you. ठीक है, now let's come to the theory part, let's come to the framework part. ठीक है, to answer the four or to solve the 4-5 problems that we have, we will use AI, but AI को यूज करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी. ठीक है, some theory we'll have to learn first. ठीक है, there are, for any investor, there are 4 investing questions. 4 investing questions for any investor. What are these questions? First question is what? किसमें इन्वेस्ट करूं या किसमें ट्रेड करूं? मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सा अच्छा ट्रेड है, पता कैसे चले? व्हाट, बेसिकली हाउ डू यू सॉल्व फॉर डिस्कवरी? मेरे स्कोप में, मेरी नजर में कैसे आएगी अच्छी कंपनी? तो पहला तो ये है, व्हाट डू आई इन्वेस्ट इन. सेकेंड, you should know the answer to why. Why are you investing in that company? Conviction आप बनाओगे तभी आप इन्वेस्ट करोगे. रीजन आपको पता होगा कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो या क्यों ट्रेड ले रहे हो, तभी इन्वेस्ट कर पाओगे. राइट? Why? Right? Third question is, you should ask, when do I take entry, when do I take exit? When, टाइमिंग पार्ट. तो पता चल गया किसमें इन्वेस्ट करना है, व्हाट, क्यों इन्वेस्ट करना है, व्हाई, कब इन्वेस्ट करना है, व्हेन, ये भी पता चल गया. एंड द फोर्थ क्वेश्चन दैट यू शुड गेट आंसर टू इज हाउ. हाउ डू आई मैनेज माय पोर्टफोलियो, हाउ डू आई मैनेज द कैपिटल. वो ट्रेड स्पेसिफिक नहीं है, इन्वेस्टिंग स्पेसिफिक नहीं है, वो पोर्टफोलियो स्पेसिफिक है. दैट इज पोर्टफोलियो. हाउ डू आई मैनेज माय कैपिटल, हाउ डू आई मैनेज माय पोर्टफोलियो. These 4 questions are there. ठीक है, पहला, दूसरा, what and why gets answered by fundamental analysis. Is that clear to all of you? What and why gets answered by fundamental analysis. Fundamental analysis is you having an understanding of what business is this. Is this a good business or not? That is fundamental analysis. ठीक है, इसका आंसर मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस से. थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस से. ट्रेंड स्टडी करेंगे हम, मोमेंटम स्टडी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस से. पोर्टफोलियो एनालिसिस, हाउ डू वी स्ट्रक्चर द पोर्टफोलियो, हाउ डू वी मैनेज द कैपिटल. क्लियर है? अब कुछ लोग जो प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, पीपल हु आर प्योर इन्वेस्टर्स, दे डोंट लाइक ट्रेडर्स. तो उनको लगता है हम तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ये दोनों करेंगे, पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर लेंगे, ये इसको देखेंगे भी नहीं. और जब एक्चुअल में बारी आती है पैसे बनाने की, एंट्री एग्जिट सही लेने की, वो कर नहीं पाते हैं. इफ आई आस्क यू एज एन इन्वेस्टर दैट जस्ट लाइक वॉरेन बफे you should hold the company forever, is it practically possible for all of you to hold any company forever? Can you hold any company forever? Can you hold any company forever? No. I know the practical answer to this. It's no. कुछ लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को, और फंडामेंटल एनालिसिस को साइड में रख देंगे, जो कि अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह गलत है. My approach that we will be discussing today is this, that we will take the help of AI to do fundamental analysis also. We will take the help of AI to do technical analysis also. We will take the help of AI to do portfolio analysis also. ये तीनों चीजें हम ऐसे सॉल्व करवा लेंगे. और जो आपको जैसे यूज करना है आप कर लीजिए. तीनों को कंबाइन करके यूज करना है, कंबाइन करके करिए. ठीक है? ठीक है? Is that all right?
Let's start off with some concepts of fundamental analysis. पहले fundamental analysis के कुछ concepts पढ़ते हैं, फिर technical analysis पे जाएंगे. In fundamental analysis, there are multiple investing frameworks. Investing frameworks की कंपनी को किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से स्टडी करें और किस तरीके से पिकअप करें, फिल्टर करें, उसके कुछ अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं. All those frameworks are based on the same principles. सारे फ्रेमवर्क सेम प्रिंसिपल पे ही बने हैं. क्या प्रिंसिपल है? See, to analyze any business, there are 3 axes. You should note it down. Note down कीजिए. There are 3 axes. X axis, Y axis and Z axis. 3 axes हैं. ठीक है. On one axis, we should be studying how quality is the business, how fundamentally strong is the business. Quality. और इसके अंदर हजारों रेशियोज आ सकती हैं, एफिशिएंसी रेशियोज आ सकती हैं, मार्जिन रेशियोज आ सकती हैं, बट सब कुछ मुझे क्वालिटी के बारे में ही बताएगा. हाउ फंडामेंटली स्ट्रांग इज द बिजनेस, हाउ क्वालिटी इज द बिजनेस. मैनेजमेंट क्वालिटी भी इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है. Then on the y axis, on the other axis, we should always keep how is this business evolving, how is this business growing. So growth कैसे है? ग्रोथ है या डीग्रोथ है? ग्रोथ. सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, कैश फ्लो ग्रोथ कैसी है, मार्जिन ग्रोथ कैसी है, एफिशिएंसी ग्रोथ कैसी है, एसेट ग्रोथ कैसी है, लायबिलिटी डीग्रोथ कैसी है. Growth, how is it evolving with each quarter, with each year? Business evolves, business changes. तो कैसे चेंज हो रहा है वो? That is growth. Z एक्सिस पे, थर्ड एक्सिस पे है कि इस क्वालिटी का बिजनेस और इस ग्रोथ का बिजनेस, हाउ मच एम आई पेइंग फॉर इट, हाउ मच इज द वैल्यूएशन, व्हाट इज द वैल्यूएशन, व्हाट्स द प्राइस दैट आई पे. सारी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस इज दिस. ऑल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज जस्ट दिस. ठीक है. अच्छा, मिस्टर सुरेश एचएस इज सेइंग मूव अ लिटिल फास्टर प्लीज. आई विल हैव अ लॉट ऑफ कांसेप्ट्स टू टीच टुडे, बट अगर आप मुझे थोड़ा फीडबैक ये देंगे कि मैं जल्दी जल्दी चलूं तो हो सकता है आपको आई स्किप सम पार्ट्स. सो आई वांट टू टेक फीडबैक राइट नाउ. शुड आई गो एट माय पेस or should I move really quickly? लोग जो आज अटेंड कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एनी विच वे. इफ यू अटेंड 2 hours or if you attend 2.5 hours, that extra half an hour you give will not harm you, hurt you, will only add more value to you. You will only learn new things. ठीक है. All right. I want to cover maximum stuff today. All right, I want to cover maximum stuff, maximum value today. ठीक है. All the entire fundamental analysis, all the frameworks are just based on these 3 axes. Everything is just based on these 3 axes. ठीक है. Even if you study all the legendary investors like Warren Buffett, like Peter Lynch, like Rakesh Jhunjhunwala, like Howard Marks, like रामदेव अग्रवाल, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका अपना अपना कोई फ्रेमवर्क है, all of them, they will be looking at these 3 axes just in different priority order. बस अलग अलग प्रायोरिटी ऑर्डर में देख रहे होंगे बस. फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफे will first look at valuation, then he will look at quality. Peter Lynch will first look at growth, then he will look at valuation. Rakesh Jhunjhunwala will first look at growth, then he will look at quality. Howard Marks will be very similar to Rakesh Jhunjhunwala, growth and quality. Ramdev Agarwal will look at quality first, then growth. If you change the order of what
you keep as number one priority. The companies that you filter, the companies that you invest in will be different. समझ आ रहा है सबको? Yes or no? अगर सिर्फ आप ऑर्डर चेंज कर दें तो आपके पास अलग कंपनीज आ जाती हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग हो जाता है. बेसिस यही है. बेसिस इज दिस ओनली. Everyone has different order, priority order to look at. Yes? अब आप दुनिया का कोई भी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क उठा लें, कोई भी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क उठा लें, आपको पहले तो ये क्लैरिटी मिल गई कि कितने फ्रेमवर्क्स पॉसिबल हैं. What are these framework bases on? Second, you pick up any framework, you will be able to understand that if you understand this. Yes or no? Yes or no? ठीक है. जब मैंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, when I started investing, I also started reading about these guys, and my own framework that I developed is basically what I have learned from these guys. I just tried to combine the best part of every investor, every legendary investor. My framework that I developed, scrap framework, is typically a combination of Peter Lynch and Rakesh Jhunjhunwala. बस दो चीजों, दो इन्वेस्टर्स को कंबाइन कर दिया मैंने, अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बन गया, स्क्रैप फ्रेमवर्क. ठीक है, ठीक है. नाउ आई विल जस्ट बी स्टार्टिंग माय डिस्कशन ऑन द स्क्रैप फ्रेमवर्क. मैं अगला आधा एक घंटा स्क्रैप फ्रेमवर्क भी लूंगा, पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा. स्क्रैप फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया, मैं मैनुअली यूज कर रहा हूं 7-8 ईयर से. उसमें अच्छा खासे रिटर्न्स भी आए हैं मुझे. आई हैव गॉट 36% रिटर्न्स ओवर द लास्ट 8 years, 36% CAGR over the last 8 years. I will also show you my portfolio. ठीक है. Should I go to this scrap start करें, scrap framework start करें? ठीक है. This framework I use to identify multi-bagger companies. I will teach you this. 2 मिनट बस मैं लगाऊंगा अपनी जर्नी पे भी. Just want to introduce myself to anyone who is attending my session for the first time. कितने लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं मेरा सेशन, फर्स्ट टाइम? Many folks. देखिए, कभी भी आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग का, ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग का कोई भी सेशन लगाएं, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू KYT. व्हाट इज KYT? नो योर टीचर. जैसे KYC होता है, नो योर कस्टमर, वैसे आप सबको करना होता है KYT, नो योर टीचर. You should know who you are learning from, who you are gaining information from, knowledge from. So I'll just be spending 2 minutes on that, and then we will continue. So my name is Akshay Gulati. All of you know that. I'm an engineer by education. I don't have any finance degree at all. I'm an engineer. I graduated. I did my BTech from IIT Guwahati. Now, I was very lucky, I was very fortunate that while I was doing my BTech, I got a chance to go to the US. I was among the very few who were selected from India to go to the US to work as a research scholar in the City University of New York back in 2013. I was invited there to work as an AI researcher. अच्छा, आप लोग मुझे चैट में बताएंगे कि 2013 में कितने लोग AI पे काम कर रहे थे 2013 में? Hardly few people, very few people. In fact, it was not even called AI back then. It was called ML, machine learning बोलते थे उसको. ठीक है. So I started working there. I was working on a project that was funded by the US Health Department. उनका एक प्रोजेक्ट था, उस पर मैं काम कर रहा था सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर. तो उस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया AI के बारे में. I learned how AI can be impactful.
I came back to India. After coming back to India, I started my first company, my first venture. I became an entrepreneur. That company became India's largest online doctor consultation platform. That the name of the company is DocSap. Later, that company got merged with another company called MediBuddy. कितने लोगों ने डॉक्सैप का नाम सुना है या फिर मेडीबडी का नाम सुना है? Many of you are users of DocSap MediBuddy also. Very good. So you've already used some part of technology that I built. ठीक है? When this merger happened, after that I took an exit. I started investing. Initially, I started investing into startups. I became an angel investor in startups. और कुछ स्टार्टअप्स में मैंने पैसे लगाए अपने, और पैरेलली मैंने स्टॉक मार्केट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. ठीक है? तो whatever framework I was using in startups, the same I started using in stock market. ठीक है? And 2020 is when I started the Future University. The Future University this next month will complete 6 years of existence. 6th year anniversary हो जाएगी हमारी next month. और आप में से बहुत सारे लोग The Future University से already जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं. You've done multiple classes with us. You're connected with many experts also. ठीक है? So this journey of mine has taught me about AI, has taught me about startups, has taught me about financial markets. Right? ये मेरी journey रही है. What you're getting in the class today is a summary of the entire journey. जो मैंने जर्नी के अंदर सीखा वो सब कुछ आपको 2-3 घंटे में बताने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है? Great. Now, why did I pick up multi-bagger investing? ठीक है? मल्टी-bagger इन्वेस्टिंग करना बहुत अनकन्वेंशनल है, क्योंकि लोग ज्यादातर जो बहुत पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग, स्टडी इन्वेस्टिंग करते हैं. ठीक है? जितने भी MBAs, फाइनेंस पीपल, दे विल से कि यार नहीं, हमें स्टडी इन्वेस्टिंग करनी है, लार्ज कैप, quality businesses, big businesses we should be investing at. And even if we get 12%, 15%, we should be good. We are okay. We are beating the inflation. मेरी जो फिलॉसफी रही स्टार्टिंग से ही कुछ और रही. Why? उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं. As I mentioned, as I told all of you that I started investing by looking at startups. पहले मैंने स्टार्टअप इन्वेस्टिंग शुरू की. ठीक है? जब आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करते हैं, you already know that when you invest in 10 startups, if you invest in 10 startups, 9 will become dead in a few years. ये आपको पहले से ही पता होता है. Every VC knows this. Only one startup will survive, and that one startup might give you 100x returns, will become a unicorn. ऐसे ही होता है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में. ऐसे ही होता है ना. Every VC in the world is just going after this one unicorn. ठीक है? स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में जब इस दुनिया से मैं आया, मैं खुद स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कर रहा था, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट इन अ वेरी सिमिलर वे. राइट? इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कंपनीज which can give me 10x, 20x, 50x returns. मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पे भी यही बन गया. And why this approach works? Let me also try to give you an analogy in that. Why this approach works? Let's take the example of cricket. See, if in cricket, if you're a batsman and you try to play a big shot, आप बहुत बड़ी एक शॉट खेलते हैं, what is the best outcome that you can get out of a big shot? What's the best outcome in terms of runs? Six runs. That's the best outcome that you can get. And what is the worst outcome that you can get? What's the worst outcome that you can get? The worst outcome is out. Out means you will not be able to play after that.
ठीक है, उसके बाद आप खेल नहीं पाएंगे. द गेम इज ओवर फॉर यू एज अ बैट्समैन. नाउ लेट्स ट्राई टू कंपेयर दैट विद इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग के साथ कंपेयर करते हैं. इन इन्वेस्टिंग, लेट अस से यू इन्वेस्टेड इन अ ग्रेट बिजनेस, बहुत ही अच्छे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया. व्हाट इज द बेस्ट आउटकम? What is the best outcome in terms of returns that you can get in investing? इन्वेस्टिंग के अंदर एक कंपनी के अंदर आपको कितने मैक्सिमम रिटर्न्स बन सकते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, नो मैक्सिमम, अनलिमिटेड. एंड व्हाट इज द वर्स्ट आउटकम दैट यू कैन गेट? वर्स्ट आउटकम कितना है? उस कंपनी के अंदर जो आपका कैपिटल है दैट गोज टू जीरो, दैट गोज टू जीरो. अब आप मुझे बताइए, आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी में जो कैपिटल जीरो बन गया, डज दैट मीन यू कांट इन्वेस्ट इन एनी अदर कंपनी? Does that mean you can't invest in any other company? No, you can keep on playing the game. In fact, that is the use of building a portfolio as well. Right? Now let's try to understand. Cricket ke andar, no matter what, your upside is limited. Upside is capped. You can get maximum 6 runs only. The downside is you get out. You will not be able to play after that. That's the downside. Investing के अंदर the upside is unlimited. Upside is unlimited. The downside is capped. Downside is capped. That's the maximum loss that you incur. Right? It makes a lot of, this is why it makes a lot of sense. Lot of sense to keep playing like Virender Sehwag here. To keep playing like Virender Sehwag here. Right? To become an aggressive player in investing. ये लॉजिक लोगों को समझ आया या नहीं आया? ऊपर से चला गया. ये लॉजिक समझ आया लोगों को? Everyone understood this? ठीक है. अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बेसिस बता रहा हूं कि मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, रीजनिंग क्या है उसकी, फिर मैं समझाऊंगा अपना फ्रेमवर्क. ठीक है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये भी दे देता हूं. लेट अस से यू आर अटेम्प्टिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, एमसीक्यू एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, and it is told to you that for every negative answer, at worst you will get -1. For any wrong answer you will get -1. But in some of the correct answers you will get 1000 or 10,000 score. अब आप मुझे बताएं, if you know this, will you be attempting all the questions or not? Will you be attempting all the questions? Yes, of course. You will be attempting all the questions. You will not be leaving any question at all. Right? ये लॉजिक बहुत ही अच्छा काम करता है, provided it is possible to find such companies which can give you 10x, 20x, 50x. It should be possible. It should not be very hard. अगर तो 6000 कंपनीज में से सिर्फ 2 कंपनीज ही 10x बनती हैं, 50x बनती हैं, फिर तो बहुत मुश्किल है भाई, फिर तो कर नहीं पाएंगे हम. द रेशियो और द परसेंटेज ऑफ मल्टी बैगर कंपनी शुड बी slightly higher. Only then we can follow this approach. Now, can all of you guess कि इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कितने परसेंटेज कंपनीज एक्चुअली मल्टीबैगर बनती हैं? अगर ये परसेंटेज नंबर बहुत छोटा हुआ तो फिर छोड़ देंगे, क्यों करना है? It will be very difficult to find these companies. You tell me, what percentage of companies actually become multi-bagger in India? What percentage? मल्टीबैगर की एग्जांपल भी मैं आपको डेफिनेशन भी दे देता हूं. द डेफिनेशन इज दैट एनी कंपनी विच इज ग्रोइंग x in x years, मतलब 2x in 2 years, 3x in 3 years, 5x in 5 years, 10x in 10 years.
So like this, or more than that, right? What percentage of companies actually become multi-bagger in India? 1 to 2%, 5%, 10%, 15%, 1%, 50% कोई बोल रहा है, 0.01%, less than 1%, 1%, 3%, 5%, 11 to 30 to 35, 5%, 20%, 1%, 6%, 2, 3%, I don't know, 3.2, 10%, 85%, अच्छा, 4%, 3%. So the average guess by the audience is, by everyone, is 5%. People are guessing कि 5% companies इंडिया में मल्टीबैगर बनती होंगी. Let's look at the real data now. We analyzed the last 5-year data. The last 5-year data we analyzed 2021 से लेके अभी तक. बट आप लोग जाके इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कीजिए, नो प्रॉब्लम. आप कोई भी 5 साल इंडियन मार्केट के उठाइए, एनी 5 years you pick up, the number will not be very different. We analyze last 5 year because recent data है. लास्ट 5 साल का डेटा देखिए, लास्ट 5 years, you will find that 40%, look at this, 40% of the companies listed on the Indian stock market, 40% grew by more than 5x in 5 years. 5x in 5 years or more than that. And I'm not even talking about very small companies. I'm talking about companies which had a market cap of more than 100 CR. 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी 2021 में होनी चाहिए थी. उसके बाद हमने देखा 40% तो 5 गुना हो गई. 20% of the companies became more than 10x. How amazing is this? How amazing is this? Right? Everyone was guessing 4-5%, 10%. ज्यादातर लोग 40% नंबर है. ठीक है. What does this mean? What does this mean? This also means that even if a monkey was investing in the Indian stock market in 2021, 2021 से लेके 2026 तक अगर एक मंकी भी इन्वेस्ट कर रहा होता तो उसका भी जो विन रेट ऑफ द मंकी होता 40% होता. 40% of the times he would have picked up the multi-baggers. Right? 40%. Now, the interesting question is this. How many of you in the class were able to beat this monkey? कितने लोग इस मंकी को हरा पाए पिछले 5 साल में? How many of you were able to beat this monkey? No one? No one? Right? No one. How many mutual fund managers? अच्छा ये बताइए. How many mutual fund managers were able to beat this monkey? No one. म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि इतना पढ़ लिख के आया है, इतना प्रोफेशनल है, पूरी कंपनी है एनालिस्ट की, वो मंकी को क्यों नहीं बीट कर पा रहे हैं? Try to understand that the objective of a mutual fund manager or mutual fund company is different. Their objective is to just beat Nifty. Nifty 12%, mutual fund performance 14-15%. That is their objective. The objective is not to find multi-baggers. You will see that in almost every mutual fund holdings, 80% of the companies are same. 80% कंपनी तो सेम होती है सारे म्यूचुअल फंड्स में. Yes or no? 80% of the companies are same.
अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मंकी 40% विन रेट के साथ पोर्टफोलियो बना सकता है अगर हम थोड़ी बहुत फ्रेमवर्क सीख लें, लॉजिकल अप्रोच सीख लें, ऑल्सो इफ वी यूज द राइट काइंड ऑफ टूल्स. Is it very, very difficult to beat this monkey? Is it very difficult to beat this monkey? No, no, right? We should be able to beat with the right approach. चलिए अब right approach सीख लेते हैं. What is the right approach? So I'm going to spend time on my own framework, which is the scrap framework. इस पे टाइम स्पेंड करते हैं. फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनीज विच कैन बिकम मल्टीबैगर. ठीक है, स्क्रैप फ्रेमवर्क. नाउ दिस इज अ, सब लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अभी. प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर ऑल्सो आउट एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, वी स्टार्ट विद द मैक्रो एंड देन वी गो फिल्टर डाउन. राइट? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड दिस फ्रेमवर्क विल बी वेरी वेरी क्लियर. So let's say the Indian economy is growing at, GDP is growing at 7 to 8%. Does that mean each sector will grow at 7-8%? Does that mean that? No. There will be some sectors which will be slow growing. There will be some which will be fast growing. First step, S stands for finding sectors. Sectors which are growing at 15%. 15% sector growth. We will do sector analysis. That is the first step. Sectors which are growing at 15%. 15% पास्ट का नहीं, पास्ट का तो बहुत ऑब्वियस होता है. फ्यूचर ग्रोथ देखनी है. वी विल हैव टू एनालाइज which sectors can grow at 15% going ahead. That is slightly difficult. I will teach you how to do it. 15% future growth. Then if the sector is supposed to grow at 15%, does that mean each company in the sector will also grow at 15%? No, some will be slow growing, some will be fast growing. Second step, find companies in this sector which are growing at 25%. Companies growth at 25%. देखिए, आप पहले सेक्टर ढूंढ लीजिए, अच्छा सेक्टर ढूंढ लीजिए. आधी रेस तो आप जीत गए. Half the race you have already won if you have identified the right sector. Mark my words. इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली half the investing job is to just find the right sector. Half the job is just to find the right sector at the right time. I will teach you how to do it also. After the sector, we will have to identify companies which can grow at 25%. Now, if the companies are supposed to grow at 25%, does that mean there will be no roadblocks in the future for that company? There will be no hurdles at all for that company? Does that mean that? No. There might be multiple hurdles. We have to identify those hurdles today. We will have to identify the roadblocks today. The third step is red flags, rejection criteria, or red flags, or roadblocks. What things can stop the growth journey of the company? What things are a risk factor for the company? Red flags. Right? For example, red flags के अंदर क्या क्या होता है? You look at what is the leverage position of the company, what is the debt taken, right? What is the strength of the cash flow, how quickly is the cash getting realized, what is the strength of the promoter holding, is there any pledging done or not, are there any related party transactions,
What is the auditor statement saying? What is the credit rating saying? Are there any governance issues or not? Are there any regulatory issues or not? For example, how many of you actually heard the news of Rajesh Exports a couple of months back? एक न्यूज आई थी राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, कितने लोगों ने सुनी थी वो न्यूज? You will be also happy to know that our AI was able to flag Rajesh Exports 1 year back. हमारे AI ने राजेश एक्सपोर्ट्स को फ्लैग कर दिया था, उस पर टैग लगा दिया था गवर्नेंस इश्यूज का, हमारे प्लेटफॉर्म पे टैग लगा हुआ था 1 साल से. न्यूज अभी आई है, न्यूज अभी आई है, 1 साल से वो टैग था गवर्नेंस इश्यूज का. ठीक है, तो इट वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम है भाई. ठीक है, इट वाज वेरी क्लियर. इफ यू लुक एट देयर स्टेटमेंट्स आल्सो, इट वाज वेरी क्लियर कि प्रॉब्लम है. देन after you have identified, let's say, a couple of companies, also filtered out companies based on red flags, you will be left with, let's say, 15-20 companies आपके पास आ गई. The fourth step is allocation. Allocation. How do you allocate your capital? How do you create a portfolio also? Portfolio creation, allocation and portfolio creation. इसके अंदर एंट्री एग्जिट भी आ जाता है कि भाई किस टाइम पे एंट्री लूं, किस टाइम पे एग्जिट लूं. That is the fourth step, allocation. Capital allocation will also include कि आपका कैपिटल कब एलोकेट हो रहा है और कब फ्री हो रहा है, मतलब when you are taking entry, when you are taking exit. ठीक है. And then there is the fifth step. मतलब आपने बिल्कुल दुनिया का बेस्ट पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद भी आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, आप नहीं जीतेंगे अगर आपने फिफ्थ स्टेप पे ध्यान नहीं दिया. फिफ्थ स्टेप इज साइकोलॉजी और पेशेंस. पेशेंस, पेशेंस. कुछ भी कर लीजिए, अगर तो पहले 4 स्टेप्स ही होते, अगर सिर्फ और सिर्फ पहले 4 स्टेप्स होते तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मैथमेटिशियंस होते, इंजीनियर्स ही होते, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोसेस है, एनालिसिस है, रिसर्च है, बस. बट सिर्फ रिसर्च एनालिसिस नहीं है, उसके अलावा एक और लेयर है, विच इज पेशेंस, विच इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी. ठीक है. और फ्रैंकली स्पीकिंग, साइकोलॉजी किसी की मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा, ना मैं आपको पेशेंस सिखा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा. ये तो आपको खुद ही मास्टर करना पड़ेगा. आई कैन ओनली गाइड यू इन सम वेज, बट इट कांट बी फिक्स्ड. इतने बड़े बड़े भगवान आए धरती पे, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, वो लोगों की साइकोलॉजी फिक्स नहीं कर पाए, अभी तक फिक्स नहीं हुई है. मैं कैसे कर दूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा. तो पहले 4 स्टेप्स के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा, आखिरी स्टेप आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. स्क्रैप फ्रेमवर्क, द फुल फॉर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द फुल फॉर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स गो वन बाय वन. Let's go one by one. You can take a screenshot of this also. ठीक है. We'll start off with sector analysis. Sector analysis के अंदर multiple concepts are there. बहुत सारे concepts होते हैं. I will teach you one concept today, which is value migration. Sector analysis के अंदर value migration पढ़ाता हूं मैं आपको. Definition सुनिए अच्छे से पहले, फिर examples पे चलते हैं. Listen to the definition very carefully. Value migration. See, after every few years, in every sector,
after every few years in every sector, there happens a big change. Because of that change, customers or market share shifts from one set of companies to another set of companies. दुनिया के हर सेक्टर में हर कुछ सालों बाद एक बड़ा चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, उस चेंज को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद क्या होता है, कस्टमर्स एक सेट ऑफ कंपनी से शिफ्ट होकर दूसरी सेट ऑफ कंपनीज पे चले जाते हैं. जब ये आप फिनोमेना होते हुए देखो, उस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन न्यू सेट ऑफ कंपनीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करते 2023 से पहले, 2023 से पहले क्या आपका पैसा बनता 2023 से पहले एआई कंपनीज में? क्या आपका पैसा बनता 23 से पहले? नहीं. एआई कंपनीज एग्जिस्ट करती थी पहले भी. क्यों नहीं बनता? क्योंकि 2023 वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. चैट जीपीटी केम, इट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन इट विल बिकम क्लियर व्हाट इज वैल्यू माइग्रेशन एंड हाउ डू वी स्टडी दिस. There are 4 factors which lead to value migration. 4 फैक्टर्स होते हैं और बस 4 ही फैक्टर्स होते हैं बस. तो सिंपल है समझना. Only and only 4 factors are there for value migration. पहला है tech changes. Tech changes. In any sector, technology can change. Second factor is cost changes. Cost changes. Right? Third factor is regulatory change. Regulatory or policy change. And the fourth factor is customer preference change. Customer taste changes. That's it. Only and only 4 factors are there. That's it. इन 4 फैक्टर्स की वजह से वैल्यू माइग्रेशन होता है और वो अगर आपने देख लिया तो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है. ठीक है, क्या एग्जांपल्स हैं इसके? हाउ डू वी स्टडी दिस? पहले पास्ट एग्जांपल्स लेते हैं, फिर प्रेजेंट एग्जांपल्स लेंगे, फ्यूचर एग्जांपल्स लेंगे. ओके, पास्ट एग्जांपल्स. 1991, what was the big change that happened in India in 1991? Big change that happened in India. Liberalization. So the Indian economy opened up. Liberalization. Right? Privatization. And because of that, many sectors went through value migration. Kaise? One of the biggest sectors that got impacted was banking, banks. आप सोचिए 1990 से पहले सिर्फ पब्लिक बैंक्स थे. 1995 में आता है एचडीएफसी, फिर आता है आईसीआईसीआई, फिर आता है कोटक, एक्सिस. And because these private banks were better able to serve the customers, they started gaining market share slowly and steadily. Value migration started to happen from public banks to private banks. And if you would have just looked at the value migration graph, मतलब सिर्फ market share shifting का graph देखते हैं अगर आप, and if you would have invested in these banks in the 1990s, you would have made amazing amount of money. Amazing amount of money you would have made. That is the first example, one example. Let's look at other examples also. 1998, in the two-wheeler segment. Before 1998, there was only one dominant company in the two-wheeler sector and one dominant product. Bajaj had Bajaj Chetak.
बजाज डोमिनेंट कंपनी टू व्हीलर में. After 98, what happened? Hero, which had a joint venture with Honda, Hero Honda, they started making 4-stroke 100cc bikes in India. Hero started making 4-stroke 100cc bikes in India. Splendor came, Passion came, Shine came. All these bikes had high mileage. They were better suited for Indian roads. So slowly and steadily, value migration started happening from scooters to motorcycles. 98 से पहले तक सारी की सारी टू व्हीलर सेगमेंट था स्कूटर्स. आप अपने घर में सोचिए 98 से पहले क्या किसी के पास बाइक थी? बहुत कम लोगों के पास. 100 में से एक बाइक थी, 99 स्कूटर्स थे. यस और नो? यस और नो? 100 में से एक बाइक होती थी, 99 स्कूटर्स होते थे. सबके घरों में स्कूटर्स थे. 98 के बाद क्या हुआ? People started buying more bikes, more motorcycles. And two companies benefited. Hero benefited in the mass segment. In the premium segment, there was another company, Eicher Motors, that also benefited. Because people started buying more motorcycles. And if you would have just looked at the market share shift happening, सिर्फ एक ग्राफ देखते और कुछ ना देखते, and if you would have invested in these two companies based on that, you would have made amazing amount of money based on that. Eicher Motors is the parent company of Royal Enfield, right? Second example था ये. Third example लेते हैं, फिर उसके बाद future examples भी लेंगे. Third example is 2008 in the telecom sector. 2008 से पहले there was only two companies, BSNL and MTNL. Two companies were there. They had all the market share. 2008 के बाद दो changes आते हैं. एक तो technology upgrade, 2G came, 2G allocation happened, 2G spectrum allocation. Also, smartphone era happened. So people started buying smartphones. Also, 2G, smartphone and spectrum allocation. इसकी वजह से 2008 के बाद there were at least a dozen telecom companies that existed after 2008. So there was Hutch, there was Docomo, there was Uninor, there was Spice, there was Vodafone, there was Idea, there was Videocon, there was Airtel, there was Aircel, there was Reliance Communication, there was Tata Communication. At least a dozen companies were there. Telenor was also there. सारा का सारा मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ यहां से यहां 2008 के बाद. और फिर सेम सेक्टर में कुछ सालों बाद आफ्टर 2015 another change happened. Again 2G got upgraded to 3G. So tech change and cost got shrunk. The price was slashed. Only two companies existed after this, Jio and Airtel. All the market share shifted from here to here. This is value migration. पूरी की पूरी इकोनॉमी में सबसे ऊपर वाली लेयर पे अगर आपको कुछ देखना है, if you have to analyze something at the macro level in each sector, you will first have to learn value migration. How is value getting migrated from different parts to different parts? Is that clear? Is that clear? Let's look at future examples now. I will give you a couple of themes. कुछ themes दूंगा मैं आपको जो आप याद रखें, हमेशा याद रखें value migration के लिए. पहला theme, first theme is value always and always migrates from public companies to private companies. Always happens. अब आप लोग मुझे examples दीजिए इसके. ऐसे कौन से sectors हैं जहां पे ये value migration हो रही है currently
in 2026 पब्लिक टू प्राइवेट वैल्यू माइग्रेशन कहां हो रही है बताइए. गिव मी एग्जांपल्स. Mrityunjay ji is saying defense, Tanmay is saying airline, Keshav is saying defense, Caesar is saying defense. So let me write defense here. Defense is one example. All right. What else? Railways, ports. Okay. So railway, port, roads. इन तीनों का कंबाइन करके मैं लिखता हूं इंफ्रा. द एंटायर इंफ्रा इज गेटिंग प्राइवेटाइज्ड. सरकार का जो भी है पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, अब वो प्राइवेटाइज हो रहा है. इंफ्रा. व्हाट एल्स? स्पेस. वेरी गुड एग्जांपल. स्पेस टेक्नोलॉजी इज गेटिंग प्राइवेटाइज्ड. व्हाट एल्स? पब्लिक टू प्राइवेट में और क्या क्या हो रहा है? पावर, एनर्जी. वेरी नाइस. पावर. व्हाट एल्स? रोड्स इसके अंदर ही आ गया, इंफ्रा के अंदर. ईवी प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है. ईवी दूसरी बकेट में आएगा, ईवी इस बकेट में नहीं आएगा. पब्लिक टू प्राइवेट क्या हो रहा है? एआई डेटा सेंटर इसमें नहीं आएगा पब्लिक टू प्राइवेट में. इंश्योरेंस. वेरी गुड एग्जांपल. even today the largest insurance company in India is a public company. So slowly and steadily value migration is happening from LIC to private insurance companies. Mining. अच्छा एग्जांपल है माइनिंग. वेरी गुड. ये हो गया पहला थीम. फर्स्ट थीम इज पब्लिक टू प्राइवेट. रिमेंबर दिस. सेकेंड थीम इज as Indian economy grows, as the per capita income of Indians grow, people will start shifting from unorganized to branded. अब इसमें एग्जांपल दीजिए. अनऑर्गेनाइज्ड टू ब्रांडेड, क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फुटवेयर, क्लोथिंग, एफएमसीजी. अच्छा, इसका एफएमसीजी का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. लेट्स पिक अप ग्रोसरीज, स्टेपल्स. कैन यू टेल मी 20 years ago when you used to buy आटा और राइस in your household, जब आपके घर में आटा या राइस आता था, was that branded atta rice or was that loose open atta rice? Tell me in the chat. Loose open atta rice, right? Now if you buy atta or rice, is that branded atta rice? So value migration has happened to a lot of extent. Still it is happening. So let me write groceries. और मैं आगे आपको एक कंपनी भी बताऊंगा जो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, which is basically benefiting from this value migration. What else? Clothes, okay. What else? What else? Apparels. Jewelry is a very good example given by Mr. Prashant B. Mr. Prashant has mentioned jewelry. Let's look at jewelry. देखिए, हर इन्वेस्टर गलती क्या करता है? हर इन्वेस्टर देखता है स्टॉक प्राइस को. सबसे पहले देख लेता है स्टॉक प्राइस कि कैसे मूव हुआ है. जैसे ही वो स्टॉक प्राइस देखता है टाइटन का, तो टाइटन का प्राइस देखो, आपको लगता है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो लोगों को लगता है ये तो ऑलरेडी ट्रेन छूट गई हाथ से. दिस हैज ऑलरेडी ग्रोन सो मच, आई हैव ऑलरेडी मिस्ड द ट्रेन. देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग राइट नाउ, राइट? सो पीपल फेल्ट दिस in 2015, people felt the same in 2018, people felt the same in 2022.
and people are still feeling the same in 2026. But what they don't realize is that Titan and the entire organized jewelry sector jitna bhi hai, Tanishq, Kalyan, all the organized players, they are still less than 10-15% of the overall jewelry sector. The overall jewelry sector is much, much bigger. A lot of unorganized players are there. Local players are there in that. Now you tell me, in the future when your kids will get married or someone in your family will get married in the future, will they buy jewelry from the local player or will they prefer buying jewelry from Tanishq or Kalyan? Branded. So the answer is clear. Value migration is still happening in jewelry. Right? Right? What else? और कौन से segments हैं और कौन से sectors हैं? Apparels, furniture. I am surprised no one mentioned hospitals. Hospitals is a very good example. Hospitals. If you look at hospitals,